Just a quick review of what we did yesterday. We started with the last topic of chapter number 12 yesterday, which is the relative motion analysis of two particles. Relative motion analysis में क्या होता है कि इससे पहले तक we have considered a single particle और उस single particle के हवाले से हमने उसकी kinematics की जो है वो बात की थी. Now in this topic we are going to consider the motion of two particles and we are going to consider the relative motion analysis के अगर दोनों particles move कर रहे हैं तो एक पार्टिकल पे एज एन ऑब्जर्वर के तौर पे अगर आप खड़े हो तो दूसरे पार्टिकल का मोशन आपको किस तरह का नजर आएगा, ये आपकी वो रिलेटिव मोशन एनालिसिस वाला टॉपिक है. सो जिस तरह हमने कल डिस्कस किया था इन दिस टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल वो तमाम चीजें जो कि यू डिफाइन विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड ओरिजिन, दे आर टर्म्ड एज एब्सोल्यूट थिंग्स. फॉर एग्जांपल दीस टू पोजीशन वेक्टर्स आर ए एंड आर बी हैव बीन डिफाइंड यूजिंग द फिक्स्ड ओरिजिन ओ. इनको आपने फिक्स्ड ओरिजिन ओ के साथ रेफरेंस किया है. सो आपके पास ये दोनों वेक्टर्स जो हैं दे आर टर्म्ड एज एब्सोल्यूट पोजीशन वेक्टर्स. इसके मुकाबले में आपके पास ये जो तीसरा वेक्टर है विच डिफाइंस द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए या पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये वेक्टर्स आपके रिलेटिव पोजीशन वेक्टर्स कहलाते हैं. रिलेटिव पोजीशन क्यों कहलाते हैं या रिलेटिव वेक्टर्स क्यों कहलाते हैं? बिकॉज आपका जो पार्टिकल ए या बी है वो इटसेल्फ मूव कर रहा है. तो आप एज एन ऑब्जर्वर अगर उस पार्टिकल के ऊपर खड़े हैं तो आप और खुद जो है वो मोशन कर रहे होंगे, तो आपके मोशन को देखते हुए उस पार्टिकल बी का मोशन आपको किस तरह का नजर आएगा. सो इट इज बेसिकली अ relative position vector. So by vector addition, we written the relative position equation, which says that the absolute position of B should be equal to the absolute position of A and the relative position of B with respect to A. So the sequence of this equation is very important. So B, A, and then B with respect to A. Similarly, if you want to write the equation for relative position of A with respect to B, then our equation would become RA should be equal to RB, which are the absolute position vectors, plus RAB, which is the relative position vector. So the sequence of AB is very important to you because RBA is not equal to RAB. Rather, RBA is going to be equal to minus RAB. यानी magnitude wise they are similar to each other. ये दोनों vectors की जो हम बात कर रहे हैं, but direction wise both these vectors are opposite to each other. So RBA should be equal to minus RAB. Then we talk about velocity. Velocity के लिए हमने क्या किया था कि हमने इसी position equation को जब एक दफा differentiate की तो we get the relative velocity equation, which is VB equal to VA plus VBA. Again the sequence is going to be the same जो कि हमने इससे पहले पढ़ा था BA और उसके बाद B with respect to A. Similarly, once we differentiate this velocity equation, we are going to get the absolute, we are going to get the relative acceleration equation, which is of the form again AB equal to AA plus ABA. Then we applied these velocity and acceleration equations and solved two examples relevant to this topic. The first one was example 12-25. The other one was example 12-26. तो ये दो हमने सॉल्व की थी. आज हम एक एग्जाम्पल और एक एक्सरसाइज का प्रॉब्लम करते हैं, and then we are going to move on to the next chapter, which is kinetics of a particle. Okay, so moving on to the next example, which is example 12-27. Quickly थोड़ा सा इसको रिव्यू करते हैं. ये examples बड़ी हद तक सिमिलर हैं उन examples के जो कि अभी तक हमने सॉल्व की थी. So we have two particles, these two cars A and B, which are traveling with the kinematics as shown. That is, car A is traveling with a speed of 18 meters per second along this road, whereas it is decelerating at a rate of 2 meters per second square. This car is traveling along a straight line track road जो कि 60 degrees के ऊपर है with respect to the positive x-axis. Then you have another car, which is this car B, and it is traveling along a curved path. At the instant shown, this car B is moving with a speed of 12 meters per second, and its tangential component of acceleration is known to you, which is 3 meters per second square. This car is traveling along a curved path, so it should have, apart from a tangential, it should have a normal component as well, and the total acceleration of B would be equal to the vector sum of its tangential and normal components. So we need to determine the velocity and acceleration of car B with respect to car A. So as an observer, if you are sitting in car A, what should be the velocity and acceleration of car B would look like to you? So आपने as an observer के तौर पे, if you are sitting in car A, आपको car B का motion किस तरह का नजर आएगा, that you have to determine. Okay, starting with the velocity first.
So starting with the velocity first, अगर हम velocity की बात करें and we are considering the conventional XY coordinate system. So starting with the velocity of car A, it is given to you as 18 meters per second. So this vector is given to you as 18 meters per second. The angle is given to you as 60 degrees. So once you want to resolve it along the X and Y axis, it should have a negative X component and a negative Y component. And the angle is given to you as 60 degrees with respect to the X axis. So it would become 18 cos 60i with a negative sign, similarly 18 sin 60i with a negative sign. So overall, this VA would become minus 18 cos 60i minus 18 sin 60j. So this is going to be the velocity of A, the absolute velocity of A. As far as the velocity of B is concerned, since at this instant, although car B is traveling along a curved path, but at this instant, it is in a position when the velocity is going to be towards the negative y-axis. So we can write this velocity of B to be equal to minus 12j. Now applying the relative velocity equation, which says that VB equal to VA plus VBA. So VBA should be equal to VB minus VA. Applying the vector addition or subtraction rules for finding this VBA. VBA comes out to be 9i plus 3.59j. The magnitude and direction are going to be the ones which are shown on the slide. So I hope that the relative velocity of B with respect to A is clear to all of you. बड़ी हद तक ये similar है to the problem which we solved yesterday. So I hope that the things are clear to you all. Yes, sir. Okay, now moving to the acceleration of B with respect to A. In order to find out the acceleration, as we have discussed earlier, that particle B is traveling along a curve path. So the total acceleration is going to be the vector sum of its tangential and normal components. So starting first with acceleration of A, it is given to you that car A is decelerating at a rate of 2 meters per second square. So if we resolve this vector into its X and Y components, we are going to have positive X component as well as positive Y component. So it would be 2 cos 60i plus 2 sin 60j. So आपके पास A जो है वो 2 cos 60i plus 2 sin 60j हो गया. As far as the acceleration of B is concerned, as we have talked earlier, that this 3 meter per second square is basically the tangential component. So AB tangential is going to be 3 meters per second square magnitude wise, and since it is directed towards the negative y-axis, so it is going to be minus 3j. So आपके पास AB tangential जो है वो minus 3j आ जाएगा. जहां तक ताल्लुक AB normal का है, so AB normal जो है, it has a magnitude of V square over rho. So V is given to you as 12 meters per second, rho is given to you as 100 meters. So 12 square over 100 would give you 1.44 as the magnitude of normal component of acceleration. As far as the direction of this normal component is concerned, since this normal component of acceleration is always going to be directed from the particle towards the center of curvature. So in this figure, if this is the position of this particle, so this is going to be the direction of AB normal, which is going to be towards the negative x-axis. So overall, this AB normal vector would become minus 1.44i, and AB vector accordingly becomes AB tangential plus AB normal. So minus 1.44i minus 3j meter per second square. Now applying the relative acceleration equation, which is ABA is equal to AB minus AA, it would give you the relative acceleration vector ABA to be equal to minus 2.44i minus 4.732j, and accordingly you can find out the magnitude and direction of this relative acceleration vector. G, anything which you want to ask regarding this solution of example 12-27? Okay, quickly moving to one of the problems from the exercise. Again, थोड़ा सा हम इसको जल्दी करेंगे, and then we will start with kinetics, क्योंकि आज हमने kinetics का भी पहला जो topic है वो complete करना है. Now in this case, we have a car which is car B. Car B is traveling along a road which is curve road having a radius of 100 meters. This car is traveling at the moment with a speed of 15 meters per second and is decelerating at a rate of 2 meters per second square. Then you have another car which is car C. It is traveling along a straight road with the kinematics shown, that is, it has a speed of 30 meters per second and it is also decelerating at 3 meters per second square. You need to find out the velocity and acceleration of car B
relative to car C. So starting with the conventional XY coordinate system, first of all, starting with the relative velocity. In order to find out the relative velocity, it is given to us that this car C is moving with a speed of 30 meters per second. So VC would become minus 30J since it is directed towards the negative y-axis. As far as the velocity of car B is concerned, it is given to you as 15 meters per second. This angle is given to you as 30 degrees. So accordingly, this angle would be 30 degrees. And the remaining angle, which is basically this angle, it is going to be 60 degrees. So you can use the 60 degrees to resolve this 15 meters per second along the x and y axis. Since this vector lies in the fourth quadrant, it means that you are going to have positive x component and negative y component. So it would become 15 cos 60i minus 15 sin 60j. So overall, VB would become 15 cos 60i minus 15 sin 60j. Then applying the relative velocity equation, which is VBC equal to VB minus VC. So you are going to get the vector VBC. This is its magnitude and this is the direction. So anything which you want to ask regarding the relative velocity of B with respect to C? कुछ पूछना चाहते हैं? Yes. Clear है? Okay, that's nice. Okay, now acceleration के लिए again we are going to apply the relative acceleration equation. But before applying this equation, this acceleration is given to you, which is acceleration of car C, and it is directed towards the positive y-axis. So AC would become 3J. जहाँ तक ताल्लुक tangential component of acceleration के AB tangential, so it is basically this particular vector. और जहाँ तक ताल्लुक angles का है, so अगर आप angles को इस्तेमाल करना चाहते हैं, you can again use this 60 degrees angles to resolve this vector. But now this vector lies in the second quadrant, therefore x would be negative and y would be positive. So minus 2 cos 60i plus 2 sin 60. J would be the tangential component of acceleration. जहाँ तक ताल्लुक normal component का है, so normal component of acceleration is going to be directed in this direction. So this vector is going to be AB normal. इसका magnitude आपको given है, which is V square over rho, because the normal component's magnitude is always V square over rho. V is known to you as 15, rho is known to you as 100. So the magnitude would comes out to be 2.25 meters per second. जहाँ तक ताल्लुक इस vector का है, so since it is directed at an angle of 30 degrees and this AB normal lies in the first quadrant, so it should have positive x component and positive y component. The angle is given to you as 30 degrees. So you can write AB normal to be equal to 2.25 cos 30i plus 2.25 sin 30j. इससे आपको AB normal मिल जाएगा. You can combine these two vectors vectorically in order to find out AB. Then you are going to apply the relative acceleration equation, which is ABC should be equal to AB vector minus AC vector, thereby getting this vector, relative acceleration vector. This is its magnitude and this is going to be the direction of ABC. So I hope that the topic is clear to you all. हमने इसमें 3 एग्जाम्पल्स और 1 प्रॉब्लम्स किए हैं इसीलिए ताकि आपको जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस बेहतर हो जाए. वैसे भी आपको जो असाइनमेंट दी है उसमें से इस टॉपिक का भी एक प्रॉब्लम शामिल है. तो ट्राई टू सॉल्व दैट असाइनमेंट बाय योरसेल्फ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक की जो है वो बेहतर हो जाए. सो एनी क्वेश्चन व्हिच यू वांट टू आस्क रेलेवेंट टू दिस टॉपिक? सर एबी ऐसे दोबारा रिपीट करें. किस चीज को? एबी को? यस सर, एबीएन ABN को दोबारा रिपीट कर दें. ओके, ABN की अगर हम बात करें तो जहां तक हमने पहले कहा था कि ABN जो है वो होता क्या है, इट इज बेसिकली द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन सिंस कार बी इज ट्रेवलिंग अलोंग अ कर्व पाथ. सो इसकी जो टोटल एक्सेलरेशन बनेगी वो इसके नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स को वेक्टोरिकली ऐड करने से बनेगी. सो दिस कंपोनेंट वाज गिवन टू यू एज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट था. नॉर्मल कंपोनेंट क्या होता है? इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. सो ये वाला आपका कंपोनेंट जो है वो AB नॉर्मल कंपोनेंट है, दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर. यानी आपका ये सेंटर है तो इसकी तरफ जो है वो डायरेक्टेड होता है. बाय डेफिनेशन दिस नॉर्मल कंपोनेंट हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ v स्क्वायर ओवर rho. So v is given to you as 15 meter per second, rho is given to you as 100 meter. So once you divide 15 square over 100, you will get the magnitude of this normal component, which is 2.25 meter per second square. As far as this vector is concerned, जिस तरह भी बात हुई है
ये आपका वो नॉर्मल कंपोनेंट है, ये आपके पास एंगल 30 डिग्रीज गिवन है। चूंकि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करता है, सो इट वुड हैव अ पॉजिटिव एक्स कंपोनेंट एंड अ पॉजिटिव वाई कंपोनेंट। एंगल चूंकि एक्स एक्सिस से गिवन है, तो कॉस वाला कंपोनेंट एक्स के अलोंग आएगा, साइन वाला कंपोनेंट वाई के अलोंग आएगा, सो इट वुड बिकम 2.25 cos 30i plus 2.25 sin 30j. So this is how you can get AB normal, और उससे फिर आपको AB मिल जाएगा, which is basically ABT plus ABN. Is it clear? कोई एंगल नहीं समझ आया? Yes, sir. Thank you so much, sir. चलिए ठीक है. Okay, so any other question relevant to kinematics of a particle? कोई इस पूरे चैप्टर के हवाले से चीज जो आप शेयर करना चाहें, डिस्कस करना चाहें? जहां तक ताल्लुक क्विज का है, तो प्रोबेबली आपके इस चैप्टर से मैंने 2 क्विज प्लान किए हैं. द फर्स्ट क्विज इज गोइंग टू बी फ्रॉम स्ट्रेट लाइन मोशन, जो कि आपके पहले 2 टॉपिक्स थे, आइदर कॉन्टिन्यूस मोशन और इरेटिक मोशन. नेक्स्ट वीक आपका जो क्विज होगा वो पहले 2 टॉपिक्स में से ही होगा. हो सकता है एक आध सवाल आपको कॉन्टिन्यूस मोशन का दे दिया जाए, एक आध आपको इरेटिक मोशन का क्वेश्चन जो है वो दे दिया जाए. देन द सेकंड क्विज विच मे बी कंडक्टेड इन द नेक्स्ट वीक, वो आपका फिर प्रोजेक्टाइल मोशन से और इक्वेशन प्रोजेक्टाइल मोशन से और आर थीटा कोऑर्डिनेट जो है उनसे कंडक्ट होगा. तो ये 2 क्विजेज आपके जो है वो इस चैप्टर से होंगे. नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह स्ट्रेट लाइन मोशन से क्विज होगा, जो पहले 2 टॉपिक्स हैं, और उससे नेक्स्ट वीक आपका प्रोजेक्टाइल मोशन और आर थीटा की काइनेमेटिक्स जो है उससे आपका जो है वो सेकंड क्विज होगा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी सर. ठीक है. जहां तक ताल्लुक टाइम ऑफ क्विज का है, तो टाइम ऑफ क्विज मैं आपके सीआर से शेयर कर दूंगा प्लान करके कि किस तरह जो है वो उसको करना है. प्रोसीजर इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली सिमिलर, जिस तरह हमने स्टैटिक से क्विज किए थे कि आपका एमएस फॉर्म से वो क्विज होगा. न्यूमेरिकल्स को हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यूज, और प्रोबेबली आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी कहीं ना कहीं सीएमएस वाला जो नंबर है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा होगा, ताकि एटलीस्ट हर एक का सोल्यूशन जो है वो दूसरे से डिफरेंट हो, हर एक का आंसर जो है वो दूसरे से डिफरेंट हो जाए. ओके, स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर. उसके बाद 9:35 के अराउंड हम इस टॉपिक की थ्योरी पढ़ के एक न्यूमेरिकल करके ब्रेक करेंगे, और इसके बाकी न्यूमेरिकल जो है वो ब्रेक के बाद कर रहे होंगे. सो स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 13 विच इज काइनेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल. अगर आपने गौर किया, अभी तक हमने जो चैप्टर नंबर 12 किया है, throughout that chapter we have talked about displacement, velocity and acceleration, but we haven't included the force in any of the टॉपिक्स. वजह क्या है कि वी वर डिस्कसिंग द काइनेमेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल, जिसमें वी आर नॉट कंसीडरिंग द फोर्स विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द मोशन, रादर वी आर ओनली फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 15, they are relevant to kinetics of a particle. Now once we talk about kinetics, then kinetic analysis क्या होती है कि if we include the force in our analysis as well, which is actually producing the motion, then that particular analysis would become kinetic analysis. Now there are 3 different methods of performing the kinetic analysis. The first one, which is going to be this chapter number 13, this method is known as force acceleration method. Now as the name indicates, ये जो force acceleration method है, they will give you a relationship between forces and acceleration of a particle. So whenever you need to find out the relationship between force and acceleration of a particle, you are going to use force acceleration method for kinetic analysis. Then chapter number 14 is work energy method. Can any one of you define how we can define work? Work को हम किस तरह define करते हैं physics में? Sir, the dot product of force and displacement. So work energy method की अगर मैं बात करूं, तो आपके पास force involve होगी, आपके पास displacement involve होगी. As far as the energy is concerned, how do you define kinetic energy? half of v square. Half mv square. So basically आपके पास velocity भी involve हो गई. So whenever in any problem you need to find out a relationship between forces, displacement and velocity, you are going to use the work energy method. तो work energy method जो kinetic analysis के हैं, वो हम उस वक्त यूज करते हैं whenever we need to find out a relationship between forces, displacement and velocity. Okay, the third method of performing the kinetic analysis, which we are going to discuss in detail in chapter number 15, it is the impulse and momentum method. First, सबसे पहली बात momentum का थोड़ा बहुत आपको idea है. How do you define momentum? The quantity of motion a body possesses. Mass into velocity. अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो इट इज गोइंग टू बी mass times velocity. इट मींस कि आपके पास
वेलोसिटी इन्वॉल्व हो जाएगी इंपल्स एंड मोमेंटम में। इंपल्स किस तरह डिफाइन करते हैं, कोई फिजिक्स में इंपल्स के हवाले से पढ़ा है? सर पढ़ा था, जो जो शॉर्ट इम्पैक्ट के लिए टाइम ऐड करती है। ठीक है, लेकिन आप उसको बाय फॉर्मूला किस तरह डिफाइन करते हैं? So rate of change of momentum. इट इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज, चेंज इन मोमेंटम जो है वो एक तरह से इंपल्स होती है, लेकिन हम उसको डिफाइन किस तरह करते हैं? इट इज बीइंग डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। सो आपके पास वेलोसिटी इन्वॉल्व हो गई मोमेंटम में, इंपल्स में फोर्स और टाइम इन्वॉल्व हो गई। सो जब जब आपको फोर्स, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशनशिप चाहिए, आप इंपल्स एंड मोमेंटम मेथड्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सो एज फार एज दिस काइनेटिक्स इज कंसर्न, इट कैन बी डन बाय एनी ऑफ दीज थ्री मेथड्स। और जनरली आप अभी देखेंगे जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे होंगे, वो तीनों में से किसी भी एक तरीके, तीनों तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। बट in exam point of view, आपने you need to manage your time well as well, so you need to judge के तीनों में से कौन सा शॉर्टेस्ट मेथड होगा that will give you a direct solution। और वो किस तरह आप जज करेंगे? वो जब जब आपको F और A का रिलेशनशिप चाहिए, फोर्स एक्सेलरेशन, जब जब आपको F S और V का रिलेशनशिप चाहिए, वर्क एनर्जी, और जब जब आपको F V और T का रिलेशनशिप चाहिए, you are going to use the impulse and momentum method। As far as this chapter 13 is concerned, तो चूंकि ये फोर्स एक्सेलरेशन मेथड का है, तो हर प्रॉब्लम पे हम फोर्स एक्सेलरेशन ही अप्लाई कर रहे होंगे। इसी तरह जब आप वर्क एनर्जी वाला चैप्टर 14 पढ़ेंगे, हर प्रॉब्लम पे हम वर्क एनर्जी मेथड अप्लाई करेंगे। इसी तरह चैप्टर 15 में इंपल्स एंड मोमेंटम वाले चैप्टर में हर प्रॉब्लम पे वी आर गोइंग टू अप्लाई द इंपल्स एंड मोमेंटम मेथड। हाउएवर आफ्टर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 3 चैप्टर्स, और उसके बाद जब आपका कोई क्विज होगा तो चॉइस वुड बी ओपन टू यू। जरूरी नहीं है कि आप वही मेथड अप्लाई करें, कभी भी पेपर में लिखा हुआ नहीं होगा कि आपने किस मेथड के थ्रू एनालिसिस करनी। आपने अपने हिसाब से जज करना होगा कि कौन सा शॉर्टेस्ट मेथड है that will give you the best kinetic solution. So is it clear to you introduction of this chapter? Yes, sir. Okay, so starting with the topics which we are going to cover in this chapter, we are going to start with the definition of Newton's laws of motion, और specifically second law की हम जो है वो बात करेंगे। Then we are going to discuss the equation of motion. What is this equation of motion? As a mechanical engineer, आपको इस equation of motion को बारहा मुख्तलिफ subjects में इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जब जब equation of motion की बात हो तो वो कौन सी equation है जिसका बात हो रही होगी, वो हम तफसील से discuss करेंगे। And then this chapter basically comprises of 3 major topics. The first one is how to write this equation of motion in terms of its rectangular components, that is how we are going to apply this equation along the x, y and z axis। ये हम आज कवर करेंगे। जो आज का मेजर टॉपिक है वो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज राइटिंग द सेम इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ इट्स नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो NTB कोऑर्डिनेट सिस्टम में हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेम इक्वेशन ऑफ मोशन, and finally how we are going to apply the same equation of motion in terms of the cylindrical components r, theta and v। तो अगर देखा जाए broadly, this whole chapter is going to have one basic equation which is the equation of motion. We are going to apply this equation of motion in all the 3 coordinate system, and then our chapter is going to be completed। इस दफा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगले वीक हम ये दोनों टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे, सो प्रोबेबली 2 और 2.5 वीक्स में ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। शुरू में ही मैंने जिक्र किया था कि वी आर स्पेंडिंग मच टाइम ऑन काइनेमैटिक्स चैप्टर। वजह क्या है कि आप बेशक काइनेटिक्स पे भी स्विच हो जाएं, जब जब आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशनशिप चाहिए होगा, आपको हर दफ़ा काइनेटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बेशक आप काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बेशक आप काइनेटिक्स का वाला प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर रहे हो। सो ज़्यादा टाइम हमने इसीलिए दिया था कि काइनेमेटिक्स आपको क्लियर हो जाए, उसके बाद ये बाकी जितने काइनेटिक्स के चैप्टर हैं ये सिंपल 2-2, 2.5 हफ्ते के चैप्टर हैं। इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि नेक्स्ट 5 to 6 वीक्स में हम काइनेटिक्स कंप्लीट कर लें, एंड देन टू द डायनामिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी। Okay, so starting with just a quick revision of Newton's laws of motion. You have studied these laws in metric FSC physics as well. Then you have studied these laws in statics as well. Most of the statics, rather completely the आपकी जितनी statics है, that is based on these 2 laws. That is a particle which is originally at rest or moving in a straight line with a constant velocity will remain in that state provided that it is not subjected to an unbalanced force, and the mutual forces of action and reaction between 2 particles are equal, opposite and collinear. So these are the 2 laws which we have generally used in statics. आपकी जितनी statics थी वो इन्हीं 2 laws के ऊपर जो है वो बेस कर रही थी, because in statics you deal with systems which are basically in equilibrium, so they were either at rest
or they were moving with a uniform velocity. However, आपके पास जितनी आपकी dynamics है और especially जितनी आपकी kinetics है, ये तीनों जो kinetics के method हैं, they are based on this second law. वो second law क्या कहता है? A particle acted upon by an unbalanced force F experiences an acceleration A that has the same direction as the force and a magnitude that is directly proportional to the force. So the second law states that F is directly proportional to A, and once you remove this constant of proportionality, sign of proportionality, आप एक constant डालते हैं, so that constant is generally the mass of the particle, so you can write F equal to ma. So आपकी ये जो equation है, which is F equal to ma, which is being derived from the second law of Newton. So this particular equation is termed as the equation of motion. So आपकी F equal to ma जो है, that is basically termed as the equation of motion, जिसमें F आपके पास force को represent कर रहे हैं, A आपके पास acceleration को कर रहे हैं, and M represents the mass of that particle. Then there is another law which is the Newton's law of gravitational attraction. ये फिलहाल हम जैसे इसकी definition देख लेते हैं. आपके सामने फ्लैश हुई भी है, इसको हमने सच एग्जाम्पल में या न्यूमेरिकल में कहीं इस्तेमाल नहीं करना, जस्ट आपको न्यूटन लॉज जब बताए जा रहे थे तो ये लॉ भी जो है वो बता दिए गए, ऑल्दो ये फिजिक्स में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, बट दिस होल चैप्टर इज गोइंग टू बी अराउंड दिस इक्वेशन विच इज टर्म्ड एज द इक्वेशन ऑफ मोशन, विच रिलेट्स द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल टू द एक्सेलरेशन at which this particle is moving due to the action of that unbalanced force. स्टैटिक्स में भी आपने ये लॉ अप्लाई किया था, कुछ याद है? जी, स्टैटिक्स में ये लॉ किस फॉर्म में अप्लाई किया था आपने? न्यूटन लॉ। आपने इस लॉ को किस तरह अप्लाई किया था? आप लिखते थे समेशन F इक्वल टू ma के बजाय 0 लिखते थे because the system was in equilibrium, so a was 0 and then you can write summation F equal to 0 and accordingly summation m equal to 0 जब हम rigid body consider कर रहे थे. So for a particle summation F equal to 0, for a rigid body if it is in equilibrium then ये आपकी moment वाली equation भी जो है वो balance होनी चाहिए थी, only then that rigid body is considered to be in equilibrium. वजह क्या थी कि since that particle was either at rest or moving with constant velocity, तो आपकी ये वाली जो term है a वो 0 हो गई थी, so right hand side of this equation would become equal to 0. However, यहाँ चूंकि आप dynamics consider कर रहे हैं in which that particle is having accelerated motion due to this unbalanced force F, तो आप वो 0 नहीं कर सकते बल्कि आप F equal to ma वाली equation जो है वो apply करते हैं. Is it clear? So let us discuss this equation of motion further. Let's consider a particle which is this particle A, and it is being acted upon by two forces. One is this force F1, the other one is this force F2. There can be other forces as well, but at the moment this particle A is being acted upon by two forces F1 and F2. Now as per our understanding of statics, if we are going to find out the resultant of these two forces, we can either use the parallelogram law or the triangle law. इसकी वजह से हमें जो resultant मिलेगा, that resultant is basically this vector जो कि आपको ये नजर आ रहा है. So this is the resultant vector FR, जिसको आप summation F से जो है वो denote करता है. Again it is a vector quantity, so ये ना F1 का magnitude अगर 200 है, F2 का 400 है, तो 200 plus 400 equal to 600 आप लिख रहे हो, नहीं, rather it is a vector quantity. So FR equal to summation F represents the total unbalanced force that is acting on the particle. ये वो total unbalanced force है जो इस particle पे act कर रही है. Newton's law क्या कहता है कि as a result of this unbalanced force, this particle is going to travel in this particular direction, that is the direction of the unbalanced force, at an acceleration which is directly proportional to the magnitude of this force. और जब आप constant of proportionality डालते हैं तो F would become ma. So this is basically the equation of motion. उसको डायग्राम या ग्राफिकली शो किया गया है कि जितनी भी अनबैलेंस फोर्स होगी, सपोज आपके पास समेशन FR इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता तो अकॉर्डिंगली आपके पास ये पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाता है, एक्सेलरेटेड मोशन करता, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ दिस अनबैलेंस फोर्स एंड द एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली सिमिलर. So this equation of motion is clear to all of you? Yes, sir. Okay, so moving on to our today's topic, which is
how to apply this equation of motion in terms of its rectangular components. आपका ये पूरे का पूरा चैप्टर जिस तरह अभी शुरू में डिस्कस हुआ था, it is going to be comprised of 3 topics और ये तीनों टॉपिक्स आपके इसी एक इक्वेशन ऑफ मोशन से रेलिवेंट हैं. आज हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में देखेंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में देखेंगे. नेक्स्ट वीक हम इसको एनटीबी और आर थीटा जी कोऑर्डिनेट्स में अप्लाई कर रहे होंगे. सो इन ऑर्डर टू अप्लाई दिस इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, let us consider a particle which is moving along any path, maybe a curved path or a straight line path, as shown to you in the figure. This particle is acted upon by an unbalanced force summation F, which has been resolved into its components along the x, y and z axis as shown to you in the figure. So आपके पास जो total unbalanced force है उसको आपने resolve कर लिया into its components along the x, y and z axis. So Fx represents the unbalanced force component along the x-axis. Similarly, Fy and Fz represents the unbalanced force components along the y and z-axis. So when a particle is moving relative to the xyz frame of reference, the forces acting on the particle as well as its acceleration may be expressed in terms of its I, j and k components. जिस तरह ये जो unbalanced force थी इसको आपने represent किया इसके तीनों components की form में summation fxi, summation fyj and summation fzk. Similarly, जो acceleration है उसको भी आपने रिजॉल्व कर लिया into its components along the x, y and z axis. Now since it is a vector equation का क्या मतलब है कि अगर वो components की फॉर्म में लिखी हुई है और बीच में equal to का साइन है, it means that the individual components on both sides of the equation should be equal to each other. So from this one vector equation you can write the 3 component equations as summation fx equal to max, summation fy equal to may and summation fz equal to maz. आपने किया क्या कि आपने इसी एक वेक्टर इक्वेशन को इसकी 3 कंपोनेंट इक्वेशंस की फॉर्म में लिख लिया. इट मींस कि आपके पास जब भी एक पार्टिकल स्पेस में मूव कर रहा होगा आपके पास उसकी रेलेवेंट 3 कंपोनेंट इक्वेशंस आ जाएंगी. इक्वेशन नंबर 1 which represents the unbalanced force and acceleration along the x axis, equation 2 which represents or which give you a relationship between the unbalanced force and acceleration along the y-axis, and the third equation is going to be along the z-axis. So if a particle is moving in space, आप कितने मैक्सिमम वेरिएबल्स के लिए इस सिस्टम को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, कितने अननोन्स के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं? Yeah, that's correct. Since you have 3 equations, so maximum 3 unknowns के लिए आप इस सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं. वो 3 unknowns जो है वो फोर्स भी हो सकती है, वो एक्सेलरेशन भी हो सकती है, कोई और चीज भी हो सकती है. मैक्सिमम 3 unknowns के लिए आप इस सिस्टम को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. However, अगर आपके पास एक पार्टिकल है which is constrained to move in the xy plane only, so then what should be the value of summation fz? 0. तो अगर एक पार्टिकल सिर्फ xy प्लेन में मूव कर रहा है तो देन द थर्ड इक्वेशन वुड बी समेशन fz इक्वल टू 0. इस समेशन fz इक्वल टू 0 का हरगिज मतलब ये नहीं है कि देयर इज नो फोर्स एक्टिंग अलोंग द z एक्सिस. रादर फोर्सेस तो एक्ट कर रही होंगी z एक्सिस के अलोंग, बट देयर इजंट गोइंग टू बी एनी अनबैलेंस्ड फोर्स अलोंग द z एक्सिस. इन अदर वर्ड्स, जितनी भी फोर्सेस z एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही होंगी दे आर गोइंग टू बैलेंस ईच अदर. और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि z डायरेक्शन में ये पार्टिकल एक तरह से इक्विलिब्रियम में है, जिसकी वजह से आपके पास समेशन fz इक्वल टू 0 आ रहा है. सिमिलरली अगर आपके पास एक पार्टिकल है which is traveling along a straight line, say summation fx which say along the x axis, so उस सूरत में समेशन fy की क्या वैल्यू हो जाएगी? 0 एज वेल. सो स्ट्रेट लाइन मोशन की जब हम बात करें तो जब भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा होगा तो उसकी सारी की सारी एक्सेलरेशन जो है वो उसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग आएगी. सपोज एक्स एक्सिस है तो सारी एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी अलोंग द एक्स एक्सिस. इन दैट केस आपके पास बाकी दोनों इक्वेशंस जो है वो 0 हो जाएंगी. अगेन इन दोनों इक्वेशंस को 0 करने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपके पास इन डायरेक्शन में फोर्सेज नहीं है, रादर इन डायरेक्शन में आपके पास कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करेगी. अनबैलेंस फोर्स सिर्फ इस स्ट्रेट लाइन एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही होगी जो कि इसको स्ट्रेट लाइन के अलोंग एक्सेलरेशन दे रही होगी. सो इज द टॉपिक क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, चूंकि काइनेटिक्स में आप ये इक्वेशंस अप्लाई कर रहे होंगे, बेशक आप वो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे हो या वर्क एनर्जी मेथड कर रहे हो या इंपल्स एंड मोमेंटम मेथड कर रहे हो, सो इक्वेशंस को आप मुख्तलिफ एक्सिस के अलोंग अप्लाई कर रहे होंगे. अब इन इक्वेशंस को अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है
कि आपने उस पार्टिकल की फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको हम एफबीडी कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाई हुई हो। क्विकली आप में से कोई एक स्टूडेंट बता सकता है कि हम फ्री बॉडी डायग्राम किस तरह बनाते थे? स्टैटिक्स में हमने बेनतेहा फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाई हैं। जी, एनीवन वॉलंटियर? Abdullah Liaquat, how we draw a free body diagram? सर हम बॉडी को डॉट से शो करते थे। देखें, अब वो तो डिपेंड करता है। इफ यू आर कंसीडरिंग इट एज अ पार्टिकल देन वी आर गोइंग टू शो इट एज अ पॉइंट मैस। इफ यू आर कंसीडरिंग अ रिजिड बॉडी, फिर हम पूरी रिजिड बॉडी को ड्रॉ करते थे। उसके बाद बनाते कैसे थे फ्री बॉडी डायग्राम? कुछ याद है? चैप्टर नंबर, मेरे ख्याल में हम चैप्टर 3, 4, 5, 6 हर एक में हमने फ्री बॉडी डायग्राम की थी स्टैटिक्स में। तो वो मोमेंट्स और फोर्सेस शो करते थे एक्सिस के अलोंग। बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि यू नीड टू आइसोलेट दैट बॉडी और दैट पार्टिकल फ्रॉम द सराउंडिंग्स। आइसोलेट करने का क्या मतलब है कि जिस जगह से वो पार्टिकल या रिजिड बॉडी जो है, या वो सिस्टम जो है, अगर हम सिस्टम की बात करें, वो पार्टिकल या रिजिड बॉडी कुछ भी हो सकता है, तो जिस जगह से वो सिस्टम सराउंडिंग्स के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, वी नीड टू रिमूव ईच एंड एवरी कनेक्शन ऑफ दिस सिस्टम विद द सराउंडिंग्स। अब हर सिस्टम, हर कनेक्शन को रिमूव करने के नतीजे में हमें कुछ ना कुछ रिएक्शन फोर्सेस मिल रही होती थी। मसलन अगर वो किसी केबल से कनेक्टेड है, तो जब आप केबल रिमूव करते थे, यू आर गोइंग टू गेट द टेंशन इन द केबल। इसी तरह अगर वो जमीन पे पड़ा हुआ है, जमीन वाला कनेक्शन आप रिमूव करते थे, तो आपको एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिलती थी। सो फ्री बॉडी डायग्राम में आप करते क्या थे कि उस सिस्टम को आप आइसोलेट करते थे, और उसके बाद उस सिस्टम के ऊपर जितनी भी अप्लाइड फोर्सेस और रिएक्शन फोर्सेस थी, वो तमाम के तमाम आप शो कर रहे होते थे ऑन दैट फ्री बॉडी डायग्राम। हर कनेक्शन को, सराउंडिंग से कनेक्शन को रिमूव करने के नतीजे में आपको कोई ना कोई रिएक्शन फोर्सेस मिल रही होती थी। सो आई होप कि वो स्टैटिक्स की चीजें आपको याद हैं, बिकॉज they are going to be required while you are drawing the free body diagram of various systems, whether it is particle in this case or a rigid body from chapter 16 onward। आपको वो free body diagram बनाने के तरीके, reaction forces क्या क्या किस किस तरह आती थी, वो तमाम चीजें जो है वो आनी चाहिए। So I hope कि statics भूले नहीं होंगे। यस ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस स्लाइड जिसमें आपको शो किए गए इनमें से कुछ एक या दो एग्जांपल्स हम आज करेंगे, और कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स भी हम आज कर रहे होंगे। ये सिंपल हमने इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि अगेन हम हर चीज़ एक्स वाई कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करते हैं। वजह क्या है कि दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज कोऑर्डिनेट सिस्टम जिससे आप ज़्यादा फेमिलियर हैं। सो वी आर गोइंग टू अगेन स्टार्ट विद एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इक्वेशन ऑफ मोशन को हम एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स में अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद एक दफ़ा आपको इक्वेशन ऑफ मोशन समझ आ जाए, देन वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेम इन NTB and R theta z coordinate system. So we are going to start with the first example, which is example 13.1 before the break, और बाकी चीजें हम ब्रेक के बाद कर रहे होंगे। Okay, example 13.1 क्या है कि you have a crate which has a mass of 50 kg. So the crate shown to you has a mass of 50 kg and it rests on a horizontal plane for which the coefficient of kinetic friction is 0.3. Now first of all, let us stop here. Friction आ गई है, friction को कौन define करेगा? Who is going to define what is force of friction? अब ये ना कहिएगा कि नहीं पढ़ी, क्योंकि सेक्शन सी तो अगर ये कहता तो हक बजाने था उनको, मैंने नहीं पढ़ाया था, आपको तो मैंने खुद पढ़ाया है। So what is this force of friction? Resistance force against a motion. Okay, so how many types of friction are there? Static और kinetic. दो बेसिक टाइप्स हैं जो हमने पढ़ी थी। वन इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक, the other one is the dynamic, या जिसको हम kinetic friction भी कहते हैं rather than dynamic friction. So one is the static friction, the other one is the kinetic friction. Anyone volunteer who want to distinguish between these two types of friction? So एक के अंदर मूवमेंट होने वाली होती है और एक में मूवमेंट हो रही होती है। होने वाली होती है, नहीं हो रही होती। हाँ, ये भी नहीं होने वाली होती है। हाँ। So whenever we talk about static friction क्या है कि आप किसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं and the particle is not moving at all, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अभी तक इतनी ज्यादा है कि आपकी जो अप्लाइड फोर्स है उसने उसको ओवरकम नहीं किया है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इज गिवन टू यू एज F equal to mu s into n, where mu s is the coefficient of static friction.
So once that maximum value or limiting value of static friction is reached, उसके बाद particle क्या करता है कि it is going to start motion. Once that particle has started motion, then the friction would become kinetic friction, and although by formula it is again going to be F equal to mu n, but now mu is going to be the coefficient of kinetic friction, which is always going to be smaller than the coefficient of static friction. वजह क्या है कि एक दफा motion start हो जाए फिर inertia और बाकी चीजें जो है वो उस motion को ज्यादा आराम से अप्लाई कर देती हैं rather than starting the motion. So static friction हमेशा ज्यादा होती है, उसका coefficient ज्यादा होता है as compared to the kinetic friction force. So I hope that these things आप इसको remember कर रहे हैं from statics. भूले तो नहीं है? नहीं सर। क्योंकि मोस्ट लाइकली इस टॉपिक में हमें फ्रिक्शन के हवाले से काफ़ी दफ़ा मुख्तलिफ प्रॉब्लम में आ रही होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. कहीं स्टैटिक आ रही होगी, कहीं काइनेटिक आ रही होगी. प्रोबेबली स्टैटिक तो कम ही आ रही होगी, ज़्यादातर जगह आपको काइनेटिक फ्रिक्शन मिलेगी बिकॉज द पार्टिकल इज मूविंग विद सम एक्सेलरेटेड मोशन. ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन जो कि फ्रिक्शन के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगा. व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? लेफ्ट। Opposite to the direction in which the applied force is tending to create motion. ओके, मैं अगर कहूँ कि दिस डेफिनेशन इज 70% कंप्लीट, कोई अहम चीज आप भूल गए 30% की, जो आप कोई और स्टूडेंट बताना चाहेगा, इसको करेक्ट करना चाहेगा? रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में हो. रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगी? नो सर, मोमेंट उस डायरेक्शन में होगी और फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट होगी. मोशन उस डायरेक्शन में होगा. मोशन सर अगेन 30% मिसिंग है. दोबारा सोचें. तो जिस सरफेस के अलॉन्ग हो रहा है मोशन उसके एंटी पैरेलल. अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूँ दोनों पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, फिर क्या होगा? फिर रिलेटिव मोशन देखा जाएगा उसमें. That's करेक्ट. मैं बेसिकली ये 30% जो कह रहा हूँ ये रिलेटिव का वर्ड है. आपके पास जब जब एक पार्टिकल स्टेशनरी और दूसरा मूव कर रहा हो तब तो ठीक है, आपकी डेफिनेशन कंप्लीट है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. लेकिन ऐसा भी हो सकता है, और अभी आप आगे देखेंगे मुख्तलिफ प्रॉब्लम में आपको दोनों पार्टिकल्स मूव या दोनों सर्फेसेस जो है वो मूव करते हुए नजर आ रहे होंगे. सो इन दैट पर्टिकुलर केस द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल ऑलवेज एक्ट इन अ डायरेक्शन opposite to the relative motion between the two surfaces. So उस केस में we are going to imagine के relative motion इन दोनों surfaces का किस तरह हो रहा है. The force of friction is going to be opposite to that relative motion. So I hope that ये relative वाली term अगर आपको याद हो, हमने chapter number 6 था friction का statics में, उस पर भी बड़ी तफसील के साथ जो है वो डिस्कस की थी. Although आपको वहां ज्यादातर एक सरफेस स्टेशनरी और दूसरा मोशन में था तो वो रिलेटिव वाला इतना इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन डायनेमिक्स में आपको प्रोबेबली वो इस्तेमाल करना पड़ेगा रिलेटिव वाली टर्म को. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes sir. Okay, now coming to our original problem, which is 13-1. So the crate is subjected to a 400 Newton towing force as shown to you, which is applied at an angle of 30 degrees. You need to determine the velocity of this crate in 3 seconds starting from rest. So can any one of you please tell me कि कौन-कौन से variables में involve हैं इस problem में? एक तो मुझे नजर आ रहा है ये 50 kg फोर्स है. सो फोर्स जो है वो यहाँ इन्वॉल्व हो रही है. इसके अलावा आपके पास वेलोसिटी है, सो वेलोसिटी इन्वॉल्व हो रही है. द अदर थिंग इज टाइम. सो आपके पास एफ, वी और टी इन्वॉल्व हो रहे हैं. सो इन केस कि आपने काइनेटिक्स के तीनों मेथड पढ़ लिए होते, आप यहाँ क्या अप्लाई कर रहे होते? इम्पल्स सर वाला। रिजल्टेंट फोर्स. If you have studied the impulse and momentum method, you can directly solve this example using the impulse and momentum method in a single step. However, since we are discussing here the force acceleration method, तो अभी हम क्या करेंगे कि पहले force और acceleration का relationship निकालेंगे, फिर हम kinematics की इस्तेमाल करते हुए acceleration, velocity और time को आपस में रिलेट कर रहे होंगे. सो अगर हमने impulse and momentum पढ़ लिया होता तो directly this question can be solved using the impulse and momentum method. However, since we have not studied it yet, so for this example, first of all, we are going to use the equation of motion in order to relate F and A. Then we are going to use kinematics in order to relate A, V and T. So is it clear to all of you? Yes sir. Okay, now in order to apply the equation of motion, first of all, we need to create the free body diagram of this
पार्टिकल जो कि हमारा क्रेट है. So in order to draw the free body diagram, जो चीजें मुझे नजर आ रही हैं, एक तो अप्लाइड फोर्स मैंने शो कर दी which is acting at an angle of 30 degrees. The next force which would be acting on this particle would be the weight of the particle, and whatever coordinate system you are considering, weight is always going to act in a downward direction. So weight को मैंने draw कर दिया as a force के तौर पे. Any other thing which you want to include in this free body diagram? The normal reaction force, वो normal reaction force क्यों आई है? Because we are removing the surface. हम सरफेस और क्रेट का कनेक्शन रिमूव कर रहे हैं. सो वंस वी आर रिमूविंग दैट कनेक्शन, वी आर गोइंग टू गेट अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिसको मैं यहाँ NC के साथ डिनोट कर रहा हूँ. जस्ट टू खाली N के साथ इसलिए नहीं कर रहा, जस्ट टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ फोर्स विच इज न्यूटन. उसको भी हम N से डिनोट करते हैं. सो इसको मैंने NC से डिनोट कर दिए. ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी कॉल दिस एज अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स? ये नॉर्मल क्यों कहलाती है? से उसको नॉर्मली एक्ट कर रही होती है. Because it 90 always degree acts in a direction which is normal to the contacting surface. So यहाँ आपका contacting surface ये है. So this NC is going to act normal to the contacting surface. इसी तरह suppose मैं आपसे कहता कि आपके पास एक inclined plane था. अब इस केस में चूंकि आपके पास contacting surface ये आ जाता है, तो the normal reaction force is going to act in this direction which is normal to the contacting surface. So यानी ये आपका normal force कहलाती क्यों है? Because it always acts normal to the contacting surface. और कुछ जो आप फ्री बॉडी डायग्राम पे इंक्लूड करवाना चाहें? सर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी. So since you are pulling this crate with a force of 400 Newton towards the right, so the probable motion is going to be towards the right. The force of friction is going to act in a direction which is opposite to this motion. Relative की term इसलिए नहीं यूज कर रहा क्योंकि already एक surface stationary है. So the motion is going to be towards the right, and accordingly the force of friction is going to be towards the left. And by definition, this force is going to be mu n, where mu is basically the coefficient of kinetic friction which is given to you as 0.3. So the free body diagram is now complete. किसी को इस free body diagram के हवाले से कोई चीज ना समझ आई हो? Okay, so once the free body diagram is clear, let us move to the equation of motion. Applying the equation along the x-axis, that is summation fx equal to max. The forces which are acting along x-axis is going to be the component of applied force, which is going to be acting towards the positive x-axis. 400 cos 30 is going to be its magnitude. The second one is the force of friction, which is acting towards the negative x-axis. So writing it as minus ff or minus mu k nc, it would be equal to ma. M is 50 kg mass of the particle and a is the acceleration. So 50a, ये आपके पास equation number 1 आ जाएगी. Okay, now rewriting the same equation along the y-axis, the forces which are acting along the y-axis is going to be the component of applied force which is acting along the positive y-axis. So 400 sin 30 आपके पास एक component आ गया. Then you have the normal reaction force which will be acting along the positive y-axis. So plus nc आपने add कर दिया. The third force is the weight of this particle which is acting downward, that is towards the negative y-axis. So आपने इसको minus w के साथ शामिल कर लिया. So since you have two equations, unknowns कितने हैं? Two unknowns. One is acceleration, the other one is nc. So once you solve these two equations, you will get the value of normal reaction and acceleration to be equal to 290.5 and 5.19 meter per second square. So यहाँ तक हर एक को clear है? Equation of motion हमने किस तरह अप्लाई की है? Yes sir. ये हमने जीरो क्यों ले ली है सेकंड इक्वेशन में राइट साइड को? सर y के along मोशन नहीं हो रहा. Because the particle is moving along the x-axis. So once it is moving along the x-axis, it would have an acceleration along x-axis only. The y component of acceleration would be equal to 0. That's why ये जो term है may ये आपके पास 0 हो गई है in equation number 2. Okay, now moving on to the kinematics side, because we were asked to find out the velocity of this particle in time 3 seconds after application of this 400 Newton force. So basically we need to find out a relationship between A, V and T. Although nazar mujhe aa raha hai ki we have applied the equation V equal to V naught plus ACT. Why we have applied, aapse jo sawal hai, why we have applied this equation? Because it was derived for constant acceleration case. Is the acceleration constant here? And if it is, how you have judged it? सर फोर्स कांस्टेंट है इसलिए एक्सप्रेशन भी कांस्टेंट होगी. That's right, because acceleration हमें कहाँ से मिल रही है? हमें मिल रही है इक्वेशन नंबर 1 से. इक्वेशन नंबर 1 में जो चीजें इन्वॉल्व हैं वो एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स है which is constant. Then you have
एनसी कहाँ से मिल रहा है? इक्वेशन 2 से मिल रहा है। अगेन इक्वेशन 2 में एनसी के अलावा बाकी तमाम चीजें कांस्टेंट है, तो एनसी भी आपके पास कांस्टेंट आएगा। इट मींस के फोर्स भी क्या कांस्टेंट हो गई, एनसी भी कांस्टेंट हो गया, मास भी कांस्टेंट है। तो चूंकि आपके पास सारी चीजें कांस्टेंट है, इसलिए आपको ये एक्सेलरेशन जो मिल रही है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और यू कैन अप्लाई द कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशंस ऑन दिस पार्टिकल। हाउएवर, अगर यही मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज करके 400 न्यूटन के बजाय से 40 न्यूटन कर देता, नाउ सिंस द फोर्स इज गिवन टू यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अकॉर्डिंगली आपके पास एक्सेलरेशन भी जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम के तौर पे आती, एंड देन यू कैन नॉट यूज दिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन, रादर इन दैट केस यू आर गोइंग टू यूज द इक्वेशंस जो जनरल काइनेमेटिक इक्वेशंस थी उनको आप इस्तेमाल कर सकते थे। सो यहाँ चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, once you apply this constant acceleration equation, the value of velocity comes out to be 15.6 meters per second. So this is going to be the velocity with which this crate would be moving after a time interval of 3 seconds. क्लियर है ये चीज? किसी को कोई डाउट, कोई क्यूरी?